execute, and A2 algorithm takes T2 seconds to execute. Okay, means if T1 is less than T2, then should we say that algorithm A1 is better than A2? Yes, please tell me. We have already discussed in the last lecture. Yes, ma'am. No, we can't say that if T1 is less than T2, that the quality of algorithm A1 is better than A2. Reason being, if A1 is executed on machine 1 with different processor or different operating system, or you can say different implementation language as that of A2, then we cannot conclude that A1 quality of A1 is better than A2. Okay, because execution time of any algorithm depends on the type of processor that we use. Okay, it may be that one person is executing the algorithm A1 on a multi-core machine. Okay, मल्टीपल प्रोसेसर मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट कर रही है तो ऑब्वियसली वो फास्टर एग्जीक्यूट करेगी एज कम्पेयर टू अ सिंगल कोर. ठीक है, एंड हो सकता है कि the type of operating system which a person A is using is different as compared to the other one. One is running on Linux machine and other one is on Windows machine. Again, there is a difference of execution. Clear? And if the choice of language is taken in C++, let it be the algorithm A1 is executed in C++ and A2 is executed in Java, then obviously the C++ की compilation time है, that is faster as compared to the Java or other programming language. Okay, then we cannot say कि जो execution time है totally उसकी quality के ऊपर depend कर रहा है. It also depends on the type of processor, type of operating system, and the choice of language used to implement that algorithm. Okay, if we are saying that all of these are same for implementing algorithm A1 and A2, then T1 is less than T2. In that case, we can say that algorithm A1 is better than A2. But vice versa is not true. Okay? Clear? If any of this is different, then you cannot predict that the algorithm A1 is better than A2. Clear? Therefore, we have to find some theoretical method. Here we are saying that these are the effective number of calculations which we have to perform in terms of their input size. Okay, and after that we can conclude that which algorithm is better than which other algorithm. Okay, clear? Therefore, we need a theoretical analysis. Okay. Here we use a high-level description of algorithm instead of an implementation. We are not implementing or finding the exact time of an algorithm. We find, we are writing in the high-level description. ठीक है, algorithm को high-level language pseudocode में ही लिखते हैं, and we are finding the effective number of operations that we have to calculate. Okay. Another thing is we characterize the running time as a function of input size n. Okay, it takes into account all possible inputs. When we calculate time complexity, we are finding which one is the average case, which one is the worst case. तो अगर input size इतना होगा तो क्या ये इसका worst case running time होगा या best case running time होगा? We are considering all of these. Okay. This allows us to evaluate the speed of an algorithm independent of hardware and software environment. Clear? Okay. Let us see how we are calculating. Suppose we have taken a simple program, say hello. Okay. And here in this function, we are passing a input n. Okay. And we are printing just hello. Okay. तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहूँ
तो ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है? लेट इट बी द साइज ऑफ n इज इक्वल टू 0. हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स hello will print? Please respond. Yes, how many number of times hello will print if the value of n is equal to 0? It will be only once. Yes, ma'am. Okay, if the value of n is equal to 100, then how many number of times hello will print? 101 में. Yes, in that case hello will only be printed once again. यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है ना, inside the function there is only one statement. Okay, and it will execute. Okay, if n is equal to, we are taking n is equal to 10,000, even though the hello statement executed only once. Clear? तो इसमें आप क्या कह सकते हैं कि जो आउट आपका एग्जीक्यूशन टाइम है, दैट इज इंडिपेंडेंट द वैल्यू ऑफ n. Clear? If it is independent the value of n, then the time complexity is big of 1. Is it okay? In another way around, we can calculate the step count, जैसे हमने last time किया था. तो यहाँ पे हम इसका step count भी कर सकते हैं. This will be suppose that every simple instruction will take a unit time. तो total time इसका क्या होगा? Fn क्या आ जाएगा इसमें? Yes, Fn will be one. Okay, तो gn क्या आएगा? You have to take gn again as one. Okay, so as per the definition of big O, we find a function gn where this fn is less than or equal to, okay, constant इसमें क्या चलेगा? You will take only one, c as a 1, okay, into gn. Okay, for all values of, yes, all values of n. ठीक है, then we say that the time complexity of this function fn will equal to big of वन. ठीक है जी, क्लियर? तो दो तरीके से आप कर सकते हैं. either you are calculating the step count, means how many number of times each simple operation will execute, and after that you are calculating the total number of steps कि कितने बार हर एक स्टेटमेंट चली. ठीक है, तो एक प्रोग्राम को रन करने के लिए कितना स्टेप काउंट आया, दैट इज fn. then we are calculating gn for that statement or that function such that it is always be less than or equal to c into g of n. Okay, then we say that f of n is big of gn. Clear? In other way around, you can see here that if I am executing this function, whatever the value of n, it will execute only this single statement, that is cout hello, means it is printing only hello once. Okay, if the running time is independent of the input n, then we say that it will take a constant time. Okay, to represent the constant time, the time complexity is shown as big of 1. Clear? Any doubt? Yes, सबको समझ आ गया भाई? Okay, next, let us take another program. Here we are changing that this hello is printed n number of times. We are putting this statement in a loop, okay, which is executed how many number of times? N number
ऑफ टाइम्स। तो इनपुट आपका जो भी रहेगा उतने नंबर ऑफ टाइम्स ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? ओके, नाउ हियर if I am saying that n is equal to 1, then hello will be printed once. If I am saying n is equal to 10, then hello will be printed for 10 times. Okay, and if it is n is equal to 100, then hello will be printed 100 times. Okay, or you can say this statement कितने number of times execute हो रही है? It will take one time to execute itself, but it is executed how many number of times? N number of times. Therefore, your fn of this function, जो step count है वो इस function का कितना होगा? This will be n. Okay, fn is n, and also you can see within the time and input size there is a linear relationship. Okay, means the time of execution linearly changes with the input size. Okay, therefore we'll say that the time complexity of this function is big of n. Is it okay? Is it clear? Okay, let us take another example. Suppose we say this hello is printed is nested inside two loops. One loop is running for n times. Okay, another loop is also running for n times. Okay, clear? Then how many number of times this cout will be printed? Hello कितने बार चलेगा ये? Yes, n square मैम, n square times, because this statement ये अगर हम इनर लूप की बात करें तो जैसे ही i का इंडेक्स चेंज हो रहा है it will run for n number of times. Okay, outer loop में इंडेक्स आपका n बार चेंज हो रहा है तो it means it will run for n square times. Clear? Here is. Here is pointer. Okay. Now here, if n is equal to 2, then hello will be printed 4 times. N is equal to 3, then hello will be printed 9 times. Okay, therefore the time complexity here is taken as n square because step count is n square. Okay, let us take another example. Suppose this hello, same function, I am keeping here this hello inside a loop which executes for I is equal to 1 till I is less than n, and every time I is updated to I into 2. Then how will you calculate the time complexity for this? कैसे calculate करेंगे? We have to find how many number of times this hello will execute. Okay, please try to find it. इसको फाइंड करने की कोशिश कीजिए प्लीज. Now we have to find that how many number of times this statement will execute. Okay, इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे? First we'll see मैम 2 to the power बेटा ये i की वैल्यू 1 है पहले टाइम जब आपकी फर्स्ट टाइम लूप एग्जीक्यूट होगा तो i की वैल्यू क्या है? 1. Okay, now this I less than n condition is true, it will execute. Next time I is updated to I into 2.
That means it is 2. Clear? And again, if it is less than n, then it will execute next time also. Then I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पहले previously 2 थी, फिर से 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो it will be 4. ठीक है जी? Clear? Then third time it will be I. हमेशा 2 raised to power kth instance आ रहा है because number of times ये execute हो रही है उतना ही इसका वैल्यू आ रहा है. ठीक है? तो ये कब तक चलेगी? जब तक 2 raised to power k n से बड़ा नहीं हो जाता, तभी ये कंडीशन फॉल्स होगा ना, I less than n. Okay, then we say that this loop will execute when for a condition when 2 raised to power k becomes greater than n. Okay, please wait, mouse is not working. Okay, we have to check this condition. Okay, तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन होल्ड करता है तो आपका लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा. इट मीन्स अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटरेशंस फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ठीक है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k विल टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड. log of this 2 raised to power k is greater than log of n. ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 2 raised to power k बाहर आ जाएगा, k log 2 बन जाएगा ना. ये फंक्शन आपको याद है लॉगरिथम के क्या होते हैं कि जो log, नाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू k log 2. okay, greater than log n. okay, now to find the value of this k, you will say you will divide this over this side. Okay, now this is equivalent to which statement? This statement. As we know कि अगर लॉगरिथम बेस सेम है दोनों का और एक कांस्टेंट का, तो ये वाला जो है ऊपर वाले का क्या बन जाता है? बेस बन जाता है. ठीक है, नाउ वी से दैट दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट फॉर मैक्सिमम ऑफ log of n time to the base 2. okay, that's why the time complexity is big O of log n to the base 2. ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज अभी पूछ लीजिए. yes, anybody has any doubt in this function? हाँ जी, समझ आ गया? should I proceed with the next one? Yes, ma'am. Let us take another is we have to discuss important rules. Let it be for a function, one function. Within a program, we have two functions. One is fn, other is gn. Suppose that मेरे एक प्रोग्राम में मैंने दो फंक्शंस लिखे हुए हैं, उस एक fn है एक gn है. Let it be time complexity of fn is t1 and time big O t1n is big O of fn and t2n is big O of gn. ठीक है, दोनों की अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है. देन t1n plus t2 is maximum of these two time complexities. Clear?
तो अगर मेरे पास एक प्रोग्राम में मल्टीपल सेगमेंट्स हैं और सबकी अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो हम ये भी देख सकते हैं कि अगर जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा है तो ओवरऑल भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, मैक्सिमम वाली आएगी। ठीक है, अगर एक फंक्शन नेस्टेड है विद इन द अनदर, then the time complexity is got multiplied. Okay, and another rule says that if Tn is polynomial of degree k, then the time complexity is big of n raised power k. Okay, then simple formulas हमें जो यूज करने पड़ती है और calculating the time complexity, one is the arithmetic series. It will be 1 plus 2 plus this. तो अगर फर्स्ट n टर्म्स का एडिशन करना हो तो क्या होता है, n into n plus 1 by 2, अर्थमेटिक सीरीज है ना। ओके, अनदर इज देयर कैन बी अ ज्योमेट्रिक सीरीज, जो आपका कोई लूप चल रहा है तो लेट इट बी, इफ यू वांट टू से कि ये इतने नंबर ऑफ टाइम चल रहा है तो इट मे जनरेट सम ज्योमेट्रिक टाइप सीरीज आल्सो, जैसे 1 plus x स्क्वायर प्लस x, हर बार एक x की पावर बढ़ रही है, तो उस केस में जो आपका रिजल्ट आएगा दैट विल बी x रेज़ पावर n plus 1 minus 1 upon x minus 1. Okay, then if anything is executing infinitely, then it will be 1 upon 1 minus x. Okay, it can be a harmonic series like 1 over k, 1 plus 1 by 2, इसका जो रिजल्ट है वो log of n9. ठीक है जी, ओके। So these are some important formulas which can be used while calculating the time complexity. Other important is log of k, then it will be approximately equal to n log n. Okay, let us take example. Suppose in this program we have two for loops. Okay, one is calculate. मैम लास्ट वाला छूट गया था। लास्ट क्या छूट गया? हाँ जी, मैम लास्ट रजे k raised to power p सीरीज है। This is 1 raised to power p, 2 raised to power p, 3 raised to power p, मीन्स नंबर इंक्रीज कर रहा है, पावर सेम रह रही है। ठीक है, तो उस केस में जो होगा दैट विल बी 1 अपॉन पावर प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ जो इनपुट साइज है आपका वो रेज्ड टू पावर p प्लस 1। ठीक है, ओके ओके यस। लेट अस टेक ए फंक्शन जहां पे हमारे पास दो सेगमेंट्स हैं, वन इज फर्स्ट फॉर लूप, अदर इज सेकेंड। ठीक है, एक ये वाली लूप है और एक ये वाली है। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूटिंग फॉर एन टाइम, अगर मैं इसको सेपरेटली करूं तो आई विल थिंक इट एज ऑर्डर ऑफ एन, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितना है, ऑर्डर ऑफ एन। और ये वाली जो है ये लूप कितने बार चल रही है, एन स्क्वायर टाइम्स, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो जो फर्स्ट रूल था आपका वो क्या कह रहा था कि अगर हमारे पास दो सेगमेंट्स हैं तो टाइम एक की t1n है और दूसरे की t2n है, देन वी टेक अ मैक्सिमम ऑफ इट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है जी। अनदर वे अराउंड हम ये भी कर सकते हैं कि हम स्टेप काउंट फाइंड आउट करें, फिर से gn और उसको कैलकुलेट करें तो भी आपका सेम ही आएगा। तो स्टेप काउंट क्या है, ये वाला है आपका, दिस वन इज टेकिंग 1, ये लूप के अंदर ये कितने बार चल रही है, n टाइम्स, सॉरी ये कितने बार चल रही है, n स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, तो स्टेप काउंट कितना आया आपका, n स्क्वायर प्लस
n प्लस 1। ठीक है, तो हम इसमें gn फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, तो gn को आप n स्क्वायर ले लीजिए एंड टेक सम कांस्टेंट सो दैट इट ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस n+1। ठीक है।